फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जदि आपण मैंने जदि OSSSC SSD सेवक सेविकार मेन्स एग्जाम पे जदि प्रिपरेशन कर वीडियो आप निश्चय भाव देखु। आज आम पढ़ा इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 2 वीडियो। आपण मैंने जदि पार्ट 1 देखी ना निश्चय भाव जाकि देखिपारे। तो आज क्वेश्चन 20 नंबर 6 क्वेश्चन द स्किल दैट इंटीग्रेट्स listening, speaking, reading and writing is grammar. Option A grammar, option B compositions, option C communications, option D translations. 26 रा correct answer is option C communications. Then 27 number questions at the elementary stage writing activities should begins with एलिमेंटरी स्टेज रे आम राइटिंग एक्टिविटीज केमिति आम आरंभ करि परिबा। एसे राइटिंग माध्यम रे, स्टोरी राइटिंग माध्यम रे, कॉपिंग एंड गाइडेड राइटिंग माध्यम रे ना ऑप्शन डी ग्रामर एक्सरसाइज माध्यम रे। तो 27 नंबर क्वेश्चन रो आंसर हे जिवो आपनक ऑप्शन सी कॉपिंग एंड गाइडेड राइटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चंस शेयर्ड रीडिंग मीन्स। शेयर्ड रीडिंग रा अर्थ कौन बा शेयर रीडिंग क्या कह जाए। ऑप्शन ए टीचर रीड्स स्टूडेंट्स लिसन। टीचर कही पढ़े आउ स्टूडेंट मैंने शुणे। स्टूडेंट्स रीड टुगेदर विथ टीचर्स गाइडेंस। टीचर्स गाइडेंस को द्वारा स्टूडेंट मैंने सांगरे पढ़े। ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग एलोन। ऑप्शन डी ग्रुप मेमोराइजेशंस। तो 28 नंबर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स रीड टुगेदर विथ टीचर्स गाइडेंस। देन 29 नंबर क्वेश्चंस द मेन एम ऑफ ओरल वर्क इन इंग्लिश। इंग्लिश रे ओरल वर्क रो मुख्य एम कौन, मेन एम कौन। ऑप्शन ए ग्रामर प्रैक्टिस, ऑप्शन बी वोकैबुलरी मेमोराइजेशंस, ऑप्शन सी फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशंस डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। सो 29 नंबर करेक्ट आंसर जीवो आपनक ऑप्शन सी फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। ओरल वर्क रो मेन एम होची ऑप्शन सी फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। Then to next questions 30 number reading aloud at the primary level helps in। उच्च पठन प्राइमरी लेवल किपरि भाव रे सहाय्य करे। ऑप्शन ए इम्प्रूविंग हैंडराइटिंग, ऑप्शन बी डेवलपिंग प्रोनाउंसिएशंस एंड फ्लुएंसी, ऑप्शन सी ग्रामर करेक्शन, ऑप्शन डी मेमोराइजिंग स्पेलिंग। 30 नंबर करेक्ट आंसर जीवो डेवलपिंग प्रोनाउंसिएशंस एंड फ्लुएंसी। 31 क्वेश्चंस डिक्टेशन एक्सरसाइजेस आर मीन टू। डिक्टेशन एक्सरसाइजेस आर मीन टू ऑप्शन ए डेवलप मेमोरी पावर, ऑप्शन बी चेक स्पेलिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ऑप्शन सी टीच ग्रामर रूल्स, ऑप्शन डी टेस्ट हैंडराइटिंग। 31 करेक्ट आंसर जीवो ऑप्शन बी चेक स्पेलिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। देन 32 नंबर क्वेश्चंस व्हिच स्किल रिक्वायर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पाई को स्किल दरकार। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। 32 नंबर करेक्ट आंसर आपन को जीवो ऑप्शन डी राइटिंग स्किल। द नेक्स्ट क्वेश्चंस पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक्टिविटीज डेवलप। पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक्टिविटीज डेवलप। ऑप्शन ए स्पेलिंग, ऑप्शन बी ग्रामर रूल्स, ऑप्शन सी ओरल फ्लुएंसी एंड वोकैबुलरी, ऑप्शन डी हैंड राइटिंग। आपन करेक्ट आंसर जीवो
Option C, oral fluency and vocabulary. The next questions. Role play in English classroom is used to. आम रोल प्ले इंग्लिश क्लासरूम रे आम केते बेला आम यूज करि थाउ. ऑप्शन ए मेमोराइज रूल्स. ऑप्शन बी डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू रियल लाइफ सिचुएशंस. ऑप्शन सी टीच स्पेलिंग. ऑप्शन डी पनिश चिल्ड्रेन. 34 नंबर करेक्ट आंसर आपन हो जीवो ऑप्शन बी develop communication skill through real life situations. The next questions. Phonic method is most helpful for. Phonic method काहे की helpful अटे. Option A, teaching reading at the early stage. Option B, teaching essay writing. Option C, teaching grammar. Option D, teaching translation. 35 number correct answer आपन के जीवो Option A, teaching reading at the early stage. The next questions. Realia in English teaching refers to. Realia in English teaching refers to. Realia English teaching रे किपरि भाबरे refers करे. Teaching grammar only. Use of real life objects as a teaching aids. Reading aloud stories. Use of dictionary. 36 number correct answer है जो आपनका ऑप्शन बी यूज ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स. 37 number questions. The project method in language teaching is useful for. Project method language teaching रे किपरि भाबरे यूजफुल अटे. Option A, only grammar translation. Option B, integrating language skills with real life experience. Option C, memorizing spelling. Option D, punishment. 37 number correct answer is आपनका option B, integrating language skills with real life experience. The next questions. Total physical response TPR is based on. Total physical response कहा ऊपर बेस अटे. Writing essay, using body action to learn language, memorizing rules, silent reading. Total physical response is based on option B, using body actions to learn language. 38 number questions correct answer is आपनका option B. Then next questions. Dialogue practice helps learners to. Dialogue practice किपरि भाबरे लर्नर्स मानकु हेल्प करे. Memorize grammar. Develop conversational skills. Translate sentence. Option D, write compositions. 39 number questions correct answer is आपनका option B, develop conversational skills. The next questions. Story completion activity develops. Story completion activity develops. Option A, grammar rules. Option B, creative thinking and writing skills. Option C, handwriting. Option D, copying skills. 14 number questions correct answer is आपनका option B, creative thinking and writing skills. The next questions. Extensive reading is mainly for. Extensive reading is mainly for. Option A, vocabulary and enjoyment. Option B, grammar correction. Option C, memorizations of text. Option D, writing practice. So extensive reading is mainly for option A, vocabulary and enjoyment. 41 number question correct answer is आपनका A, vocabulary and enjoyment. Friends, आपण मन जानते पूरा OTT एग्जाम ला, CTT एग्जाम ला, ऑल टीचिंग एग्जाम्स ये जो क्वेश्चंस ला ना एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग
यही क्वेश्चन गुड़ाक बारंबार परीक्षा रे पड़े तो आपण मैंने टी भलसे देखी पढ़ी थे ये क्वेश्चन गुड़ाक देन नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन इंटेंसिव रीडिंग मीन्स इंटेंसिव रीडिंग अर्थ कौन इंटेंसिव रीडिंग ऑप्शन ए रीडिंग फॉर स्पीड ओनली ऑप्शन बी रीडिंग फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन सी रीडिंग साइलेंटली फॉर फन ऑप्शन डी रीडिंग स्टोरीज अलाउड सो इंटेंसिव रीडिंग मीन्स इंटेंसिव रीडिंग अर्थ होची ऑप्शन बी रीडिंग फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग आम डिटेल अंडरस्टैंडिंग पे आम इंटेंसिव रीडिंग करि थाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्री रीडिंग एक्टिविटी जो ऑप्शन गुड़ा मध्य कोटा प्री रीडिंग एक्टिविटी रा गोटे एग्जांपल अटे ऑप्शन ए साइलेंट रीडिंग ऑप्शन बी गिविंग बैकग्राउंड नॉलेज एंड पिक्चर्स ऑप्शन सी राइटिंग समरी ऑप्शन सी डी ग्रामर ड्रिल सो 43 क्वेश्चंस रा करेक्ट आंसर हो आपको ऑप्शन बी गिविंग बैकग्राउंड नॉलेज एंड पिक्चर्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस द phonic symbols are used for the phonic symbols are used for option A spelling rules option B correct pronunciation option C writing essay option D memorizing vocabulary 44 क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो आपको ऑप्शन बी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन द नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीमिंग मीन्स स्कीमिंग अर्थ कौन ऑप्शन ए रीडिंग क्विकली फॉर जनरल मीनिंग रीडिंग वर्ड बाय वर्ड रीडिंग फॉर स्पेलिंग रीडिंग अलाउड so skimming means option A reading quickly for general meaning 45 number correct answer जो आपको A reading quickly for general meaning the next question scanning ର अर्थ कौन scanning means option A reading fast for detailed understanding searching option B searching for specific information option C reading aloud option D reading silently for fun so scanning means option B searching for specific information 46 number question ra correct answer jiba apanko option B searching for specific information the next questions interactive activities in English classroom mean interactive activities in English classroom mean option A individual memorization option B group work and pair work option C teacher lecture option D silent reading so 47 number question correct answer is apanko option B group work and pair work the next questions language lab in elementary schools helps in language lab in elementary schools helps in elementary schools रे language lab किपरि भाव रे हेल्प करे पिला मानकू ऑप्शन ए राइटिंग प्रैक्टिस ऑप्शन बी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल डेवलपमेंट ऑप्शन सी मेमोराइजेशन ऑप्शन डी ग्रामर करेक्शन 48 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर जी आपको ऑप्शन बी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल डेवलपमेंट द नेक्स्ट क्वेश्चंस peer learning in English classrooms encourage peer learning in English classroom encourage English classroom रे peer learning काहे कि माने इनकरेज करी पिला मानकू ऑप्शन ए कंपटीशन ओनली ऑप्शन बी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ क्लासमेट ऑप्शन सी टीचर लेक्चर ना ऑप्शन डी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस 49 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर जी आपको ऑप्शन बी लर्निंग विद द हेल्प ऑफ क्लासमेट
Then 15 questions. The most effective learning material for elementary children is. The most effective reading material for elementary children is. Option A, newspaper. Option B, simple story books with pictures. Option C, encyclopedia. Option D, grammar books. तो most effective reading material elementary children ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ option B, simple story books with pictures. Then next questions. The direct method emphasizes. डायरेक्ट मेथड कहाँ पर गुरुत्व दिए? ऑप्शन ए ट्रांसलेशन. ऑप्शन बी लर्निंग थ्रू टारगेट लैंग्वेज ओनली. ऑप्शन सी मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर रूल्स. ऑप्शन डी यूजिंग बाइलिंगुअल डिक्शनरी. तो फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड गुरुत्व दिए टारगेट लैंग्वेज उपरे माने आम इंग्लिश टू इंग्लिश पे पढ़ेबा ताकू कहे डायरेक्ट मेथड. सो 51 नंबर करेक्ट आंसर जी आपन ऑप्शन बी लर्निंग थ्रू टारगेट लैंग्वेज ओनली. Then 52 number questions. The grammar translation method emphasizes. Grammar translation method कहाँ पर गुरुत्व दिए? ऑप्शन ए स्पीकिंग एंड लिसनिंग. ऑप्शन बी ट्रांसलेशन एंड मेमोराइजेशन. ऑप्शन सी रोल प्ले. ऑप्शन डी कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस. सो 52 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर जो आपन ऑप्शन बी translations and memorization. The next questions. Communicative language teaching CLT emphasizes. Communicative language teaching कहाँ पर गुरुत्व दिए? ऑप्शन ए मीनिंगफुल कम्युनिकेशन. ऑप्शन बी मेमोराइजिंग ग्रामर. ऑप्शन सी ओनली रीडिंग. ऑप्शन डी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस. Communicative language teaching emphasizes on option A meaningful communication उपरे. So 53 number question correct answer जी आपन ऑप्शन ए meaningful communication. The next questions. Audio lingual method focus on. Audio lingual method कहाँ परे गुरुत्व दिए? ऑप्शन ए रीडिंग स्टोरीज. ऑप्शन बी रिपीटिशन एंड ड्रिल्स. ऑप्शन सी ट्रांसलेशन. ऑप्शन डी साइलेंट रीडिंग. ऑडियो लिंगुअल मेथड फोकस ऑन ऑप्शन बी रिपीटिशन एंड ड्रिल्स. 54 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर है आपन ऑप्शन बी रिपीटिशन एंड ड्रिल्स. द नेक्स्ट क्वेश्चंस. The main drawback of grammar translation method is. The main drawback of grammar translation method is. Option A lack of grammar teaching. Option B lack of communication practice. Option C too much oral work. Option D too much creativity. तो यही क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर जी आपन ऑप्शन बी lack of communication practice. The next questions. Scaffolding in English pedagogy means. English pedagogy रे scaffolding रो अर्थ कौन? ऑप्शन ए गिविंग टेम्पोरारी सपोर्ट टू लर्नर्स. ऑप्शन बी पनिशिंग लर्नर्स. ऑप्शन सी मेमोराइजिंग टेक्स्ट. ऑप्शन डी करेक्टिंग स्पेलिंग ओनली. सो यही क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर जी आपन ऑप्शन ए गिविंग टेम्पोरारी सपोर्ट टू लर्नर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चंस. कोड स्विचिंग इन क्लासरूम मीन्स. कोड स्विचिंग इन क्लासरूम मीन्स. ऑप्शन ए यूजिंग ओनली इंग्लिश. ऑप्शन बी यूजिंग बोथ इंग्लिश एंड मदर टंग. ऑप्शन सी राइटिंग कोड्स. ऑप्शन डी टीचिंग ग्रामर. तो
57 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो आपनक ऑप्शन बी यूजिंग बोथ इंग्लिश एंड मदर टंग. The next questions. The situational approach in English teaching uses English teaching रे situational approach कहीं हम यूज करी थाउ. ऑप्शन ए रियल लाइफ सिचुएशन टू टीच न्यू लैंग्वेज. ऑप्शन बी ओनली ग्रामर रूल्स. ऑप्शन सी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस. ऑप्शन डी मेमोराइजेशन. यही क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो आपन ऑप्शन ए रियल लाइफ सिचुएशंस टू टीच न्यू लैंग्वेज. द नेक्स्ट क्वेश्चंस. The child centered approach in English teaching focus on English teaching रे child centered approach कहा पर गुरुत्व दिए. टीचर्स लेक्चर, एक्टिव participations of learners, memorizations only, copying text. चाइल्ड सेंटर अप्रोच इंग्लिश टीचिंग रे गुरुत्व दिए एक्टिव पार्टिसिपेशंस ऑफ लर्नर्स. ऑप्शन बी ए क्वेश्चन रा करेक्ट आंसर हो. देन 60 नंबर क्वेश्चंस. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन इंग्लिश टीचिंग बिलीव्स दैट. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन इंग्लिश टीचिंग बिलीव्स दैट. ऑप्शन ए लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस. ऑप्शन बी नॉलेज इज ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम टीचर. ऑप्शन सी लर्नर्स मेमोराइज. ऑप्शन डी लर्नर्स ट्रांसलेट टेक्स्ट. यही क्वेश्चंस रा करेक्ट आंसर हो आपन ऑप्शन ए लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस. द नेक्स्ट क्वेश्चंस. मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम शुड बी सीन एज. Multilingualism in classroom should be seen as. Option A problem. Option B a resource for learning. Option C a barrier only. Option D a punishment tool. So 61 number question so correct answer is आपनक option B a resource for learning. Then next questions. The whole language approach emphasizes. The whole language approach emphasizes. Whole language approach कहाँ पर गुरुत्व दिए. ऑप्शन ए टीचिंग ग्रामर सेपरेटली. ऑप्शन बी इंटीग्रेटिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग नेचुरली. ऑप्शन सी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस. ऑप्शन डी ओरल ड्रिल्स ओनली. यही क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो आपन ऑप्शन बी integrating reading, writing, listening and speaking naturally. The next questions. Constructive feedback in English class means. Constructive feedback in English class means. Option A criticizing learners. Option B guiding learners positively for improvement. Option C punishing errors. Option D ignoring mistakes. तो यही क्वेश्चंस रा करेक्ट आंसर हो आपनक ऑप्शन बी गाइडिंग लर्नर्स पॉजिटिवली फॉर इम्प्रूवमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चंस. व्हिच मेथड यूजेस ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन. आम को मेथड यूज करी थाउ ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन पाई. ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, सिचुएशनल मेथड. सो यही क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो आपन ऑप्शन डी सिचुएशनल मेथड. द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Activity based learning is mainly associated with. Activity based learning खास सहित associated अटे. Teacher centered classroom, child centered classrooms, grammar teaching only, translation drills.
Activity based learning is mainly associated with option B, child centered classrooms. The next questions, which is the best method to teach poems at elementary level? Elementary level रे जिते आम poems पढ़ेबा को मेथडटा बेस्ट अटे? Memorizations only, recitation with actions and rhythm, translation, or option D, silent reading. So here questions the correct answer is option B, recitation with actions and rhythm. The next questions, group discussion in elementary English helps in. Group discussions केमती हेल्प करे? ऑप्शन ए मेमोराइजेशन, ऑप्शन बी डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन डी राइटिंग समरीज. So group discussions in elementary English helps in option B, developing confidence and communication skills. The next questions, collaborative learning means. collaborating learning रा अर्थ कौन बा collaborative learning काहाकू कहा जाए? ऑप्शन ए वर्किंग टुगेदर टू अचीव लर्निंग गोल्स, ऑप्शन बी इंडिविजुअल मेमोराइजेशन, ऑप्शन सी टीचर लेक्चर ओनली, ऑप्शन डी राइटिंग असाइनमेंट्स. collaborative learning means option A, working together to achieve learning goals. Then next questions, mother tongue should be used in English teaching. Mother tongue should be used in English teaching. Option A, never, option B, when necessary for clarity and support, option C, in every sentence, option D, only for translation. तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन करेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन बी, व्हेन नेसेसरी फॉर क्लैरिटी एंड सपोर्ट. देन 70 नंबर क्वेश्चंस, व्हिच इज अ फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग वोकाबुलरी. जिते बेला हम वोकाबुलरी पढ़ेबा आम को फर्स्ट स्टेप आम यूज करवा? ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग डिक्शनरी, ऑप्शन बी, गिविंग मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी, ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी, मेमोराइजेशन. 70 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन बी, गिविंग मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चंस, एरर करेक्शन इन एलिमेंटरी इंग्लिश शुड बी. एरर करेक्शन इन एलिमेंटरी टीचिंग शुड बी. ऑप्शन ए, encouraging and positive, ऑप्शन बी, harsh and strict, ऑप्शन सी, ignored always, ऑप्शन डी, public punishment. तो यही क्वेश्चन करेक्ट आंसर जीव आपन ऑप्शन ए, encouraging and positive. The next questions, reading aloud competitions help in. Reading aloud competitions help in. Option A, silent reading skills, option B, pronunciation and confidence building, option D, grammar correction, option D, vocabulary memorization. Reading aloud competitions helps in आपन ऑप्शन बी हो pronunciations and confidence building. The next questions, playway method is most useful in. Playway method is most useful in. Playway method कहीं की माने बहुत यूजफुल अटे? ऑप्शन ए, एलिमेंटरी इंग्लिश क्लासरूम, ऑप्शन बी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, ऑप्शन सी, ग्रामर टीचिंग ओनली, ऑप्शन डी, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस. Playway method is most useful in
elementary English classroom. A question so correct answer is option A, elementary English classrooms. Then next questions. Experiential learning in English pedagogy means. Experiential learning in English pedagogy means option A, learning by doing and experiencing. Option B, learning only by listening. Option C, memorizing rules. Option D, translation. ଏହି क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो आपणक ऑप्शन ए, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Scaffolding questions are used to. Scaffolding questions are used to. आमे scaffolding questions केतेबेला हम यूज करि थाउ बा काहे कि हम यूज करि थाउ. ऑप्शन ए, हेल्प लर्नर्स थिंक स्टेप बाय स्टेप. ऑप्शन बी, पनिश लर्नर्स. ऑप्शन सी, टीच स्पेलिंग ओनली. ऑप्शन डी, मेमोराइज आंसर. Scaffolding questions are used to. Option A, helps learners think step by step. The next questions. Formative assessment in English is mainly for. Formative assessment in English is mainly for. Option A, ranking students. Option B, continuous feedback and improvement. Option C, final exam marks only. Option D, punishing weak students. आमे कहीं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आमे करि थाउ. तो आपणक एही क्वेश्चन करेक्ट आंसर जिवो ऑप्शन बी, कंटीन्यूअस फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट पई. आमे कंटीन्यूअस फीडबैक और इंप्रूवमेंट पई फॉर्मेटिव असेसमेंट करि थाउ. द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Summative assessment is conducted. Summative assessment केते बेल करा जाए. ऑप्शन ए, डेली. ऑप्शन बी, वीकली. ऑप्शन सी, एट द एंड ऑफ ए टर्म. ऑप्शन डी, इनफॉर्मली ओनली. तो आम समेटिव असेसमेंट करि थाउ एट द एंड ऑफ ए टर्म. गोटे टर्म रो एंड पर आम समेटिव असेसमेंट करि थाउ. देन नेक्स्ट क्वेश्चंस. Portfolio assessment means. Portfolio assessment means. Portfolio assessment माने कौन. ऑप्शन ए, कीपिंग लर्नर्स वर्क कलेक्शन टू assess group progress. ऑप्शन बी, फाइनल एग्जाम. ऑप्शन सी, ओरल टेस्ट. ऑप्शन डी, डिक्टेशन. Portfolio assessment means option A, keeping learners work collection to assess progress. The next questions. Rubrics in assessment are. Rubrics in assessment are. Option A, guidelines for scoring and performance levels. Option B, grammar rules. Option C, translation notes. Option D, spelling lists. Rubrics in assessment are. Option A, guidelines for scoring and performance levels. The next questions. Which type of test checks real life communication ability? Which type of test checks real life communication ability? रियल लाइफ कम्युनिकेशन एबिलिटी रे आमे को प्रकार टेस्ट आमे करि थाउ चेक करबा पई. ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कम्युनिकेटिव टेस्ट, ग्रामर टेस्ट और डिक्टेशन टेस्ट. सो एही क्वेश्चन रा करेक्ट आंसर हिबा आपनक ऑप्शन बी, कम्युनिकेटिव टेस्ट. आमे कम्युनिकेटिव टेस्ट करि थाउ रियल लाइफ कम्युनिकेशन एबिलिटी को चेक करबा पई. Then next questions. Diagnostic test is used to.
डायग्नोस्टिक टेस्ट आम कहीं यूज करि थाउ ऑप्शन ए फाइंड आउट लर्नर्स डिफिकल्टीज ऑप्शन बी गिव फाइनल मार्क्स ऑप्शन सी पनिश स्टूडेंट्स ऑप्शन डी प्रोमोट लर्नर्स आपण जानिथिबे आम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करि थाउ फाइंड आउट लर्नर्स डिफिकल्टीज गोटे लर्नर्स डिफिकल्टीज को आम फाइंड आउट करने डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करि थाउ सो ये क्वेश्चन आंसर जीव आपन ऑप्शन ए देन 82 नंबर क्वेश्चंस रेमेडियल टीचिंग इज नीडेड व्हेन रेमेडियल टीचिंग कितने बेले दरकार पड़े ऑप्शन ए लर्नर्स आर वीक इन स्पेसिफिक एरियाज ऑप्शन बी लर्नर्स आर ब्रिलियंट ऑप्शन सी लर्नर्स कंप्लीट ऑल टास्क ऑप्शन डी learners are absent. So remedial teaching is needed when learners are weak in specific areas. So 82 number question answer is option A. The next questions. Open book test encourages. Open book test encourages. Option A memorization. Option B understanding and application. Option C copying. Option C translation. यही क्वेश्चन सर आंसर जीव ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट डेवलप्स. सेल्फ असेसमेंट डेवलप्स. Option A independence and reflection. Option B memorization. Option C punishment. Option D translation skills. Self assessment develops independence and reflection. A question answer is option A independence and reflection. The next questions. Peer assessment means. Peer assessment means. Peer assessment अर्थ कौन. ऑप्शन ए टीचर चेकिंग वर्क. ऑप्शन बी लर्नर्स assessing each other's works. Option C parents checking homework. Option D principal assessing students. Peer assessment means option B learners assessing each other's work. The next questions. Which is the best tool for assessing listening skill? Listening skill को assess करने पाई कौ टूल टा बेस्ट अटे. ऑप्शन ए डिक्टेशन. ऑप्शन बी ओरल इंटरव्यू. ऑप्शन सी रीडिंग अलाउड. ऑप्शन डी ट्रांसलेशन. यही क्वेश्चन आंसर जीव ऑप्शन बी ओरल इंटरव्यू. लिसनिंग स्किल को एक्सेस करने पाई बेस्ट टूल होची ओरल इंटरव्यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the best tool for assessing speaking skill? Speaking skill को assessing करने पाई कोटा गोटे बेस्ट टूल अटे. ऑप्शन ए रोल प्ले एंड ओरल प्रेजेंटेशन. ऑप्शन बी ग्रामर टेस्ट. ऑप्शन सी राइटिंग टेस्ट. ऑप्शन डी रीडिंग अलाउड साइलेंटली. सो यही क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जीवा आपनको ऑप्शन ए रोल प्ले एंड ओरल प्रेजेंटेशन. आम रोल प्ले एंड ओरल प्रेजेंटेशन द्वारा स्पीकिंग स्किल को आम एक्सेस कर परिबा. द नेक्स्ट क्वेश्चन. टू टेस्ट रीडिंग comprehension the teacher should use. To test reading comprehension the teacher should use. Option A multiple choice questions on a passage. Option B oral drill. Option C dictation. Option C dictation. Option D translation.
ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅନ୍ ଏ ପେସେଜ୍। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସର ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। The next questions to test writing skill the best activity is option A filling blanks only, option B creative writing or guided writing, option C memorization, option D copying from book। तो यही क्वेश्चन आंसर जी ऑप्शन बी क्रिएटिव राइटिंग और गाइडेड राइटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जहाँ हम कहते हैं CCE मीन्स सीसी रो अर्थ कौन? ऑप्शन ए असेसमेंट एट द एंड ओनली, ऑप्शन बी रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्कोलास्टिक एंड कोकोलास्टिक एरियाज, ऑप्शन सी ग्रामर टेस्ट, ऑप्शन डी फाइनल exams only। So CCE means option B regular assessment of scholastic and co-scholastic areas। 19 number question answer is option B। The next questions project work in English is a type of option A summative assessment, option B formative assessment, option C punishment, option D translation exercise। यही क्वेश्चन आंसर जीव ऑप्शन बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चंस 92 नंबर क्वेश्चंस होलिस्टिक इवैल्यूएशन फोकस ऑन होलिस्टिक इवैल्यूएशन कहाँ पर गुरुत्व दिए? ऑप्शन ए ओनली ग्रामर, ऑप्शन बी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, ऑप्शन सी ओनली रीडिंग स्किल, ऑप्शन डी ओनली राइटिंग स्किल। होलिस्टिक इवैल्यूएशन फोकस ऑन ऑप्शन बी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चंस which of the following is a higher order questions? Which of the following is a higher order questions? Option A what is the meaning of apple? Write a story using the word apple. Spell the word apple. Option D translate apple। यही क्वेश्चन आंसर जीव ऑप्शन बी राइट ए स्टोरी यूजिंग द वर्ड एप्पल। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस remedial exercises in English teaching M2 remedial exercises in English teaching M2 option A eliminate errors and strengthen weak areas, option B punish students, option C increase homework load, option D memorize text। यही क्वेश्चन आंसर जीव ऑप्शन ए eliminate errors and strengthen weak areas। Then next questions which is the best way to motivate young learners? young learners मानकु मोटिवेट करिबा पई कोटा गोटे बेस्ट वे अटे? ऑप्शन ए scolding them, option B praising and rewarding efforts, option C giving heavy homework, ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। एक क्वेश्चन आंसर जीव ऑप्शन बी प्रेजिंग एंड रिवार्डिंग एफर्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चंस लर्निंग आउटकम्स इन इंग्लिश टीचिंग मीन लर्निंग आउटकम्स इन इंग्लिश टीचिंग मीन ऑप्शन ए फाइनल एग्जाम मार्क्स, option B observable achievements of learners, option C teachers efforts, option D grammar knowledge only। एक क्वेश्चन आंसर जीव ऑप्शन बी observable achievements of learners। ऑप्शन बी जीव एक क्वेश्चन आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चंस diagnostic evaluation is done
Diagnostic evaluation is done. Option A, before teaching to identify learner's level. Option B, after final exam. Option C, only once a year. Option D, never. Diagnostic evaluation is done. Option A, before teaching to identify learner's level. A question's answer is option A. The next questions. Language games for assessment help in. Language games for assessment help in. Option A, enjoyable evaluation of skills. Option B, wasting time. Option C, only grammar drills. Option D, copying answers. A question's answer is option A, enjoyable evaluation of skills. Then next questions. The best way to handle mixed ability classroom is. गोटे क्लासरूम रे बहुत माने मिक्स्ड एबिलिटी पिला अच्छा तो आम से केमती हैंडल करवा माने कोटा गोटे बेस्ट वे से आम केमती हैंडल करवा. ऑप्शन ए, गिव सेम टास्क टू ऑल. ऑप्शन बी, प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड टास्क एंड ग्रुप वर्क. ऑप्शन सी, पनिश वीक लर्नर्स. ऑप्शन डी, इग्नोर ब्राइट लर्नर्स. So यही क्वेश्चन आंसर is ऑप्शन बी, प्रोवाइड differentiated task and group work. Then as your last questions. The ultimate goal of teaching English at the elementary level is. The ultimate goal of teaching English at the elementary level is. Option A, to develop grammar knowledge. Option B, to develop communication and lifelong learning skills. Option C, to prepare for exams only. Option D, to translate text. So a question's answer is option B, to develop communications and lifelong learning skills. आपण मैंने ए वीडियो देखि बहुत बहुत धन्यवाद. आपण मैंने निश्चय भाव लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे. पुणी मु आपण इंग्लिश पेडागोजी पार्ट 3 पार्ट 2 एमती वीडियो आनिबी. थैंक यू.